Students, today we will do some extra questions on the topic finding the roots of the quadratic equations if they exist by the method of completing the squares. So here we have different types of questions. So let's start. So our question number one. But again, I'll tell you the same thing. First of all, you have to do all these questions yourself. पहले आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए and if you are not able to solve the questions, then only go through the video. So first of all, try it yourself. So your question one is 3x square plus 11x plus 10 equal to 0. Now students, I told you that whenever you have to use the method of completing the squares, so the first and the foremost step is you have to divide both sides of this quadratic equation by the coefficient of x square. जो भी यहाँ पर coefficient of x square होगा. So यहाँ पर in this question 3 is the coefficient of x square. So first step is dividing both sides by 3. So what we get? So 3x square plus 11x plus 10 whole upon 3 is equal to 0 by 3. So 0 by 3 we know it's 0. Now 3x square upon 3 कितना होगा? X square. Then 11 upon 3 remains 11 upon 3. 10 upon 3 is 10 upon 3. Now, the next step is, as this method suggests, by completing the squares. तो हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है. So अब देखिए, either we have to use the identity a plus b whole square or a minus b whole square depending upon the question. Now let's change into whole square. Let this is a. So you write this as a square. Now students, first of all I'll tell you which identity we are going to use here. A square, because अगर यहाँ प्लस है तो we use the identity of a square plus 2ab plus b square equals to a plus b का whole square. Depending upon the value, the sign, whatever here. If it is minus, so we use the identity of a minus b whole square. So a square plus 2 is also the formula. We write 2. A means x into b. अब b क्या होगा बेटा? b में हम क्या लिखेंगे? जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा, whatever may be the coefficient of x, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है. मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 2. ये मीनिंग हुआ. सो क्या आ जाएगा? 11 अपॉन 3 इंटू 2. ये हम अपने मर्जी से लिखेंगे सो डैट, बिकॉज अगर हम इनको सॉल्व करते हैं 2 2 काटेंगे, सेम आ गया 3x. नाउ प्लस 10 by 3 equals to 0. Okay, now what to do? What we have? X square plus 2 into x into 11 by 6. अब क्योंकि हमने यहाँ पर 11 by 6 लिखे अपनी मर्जी से, so what we do? We have to add the square of this term, जो b है हमारा, and we have to subtract the square of this term. This is the basic step that you have to follow. Okay? मतलब जो भी यहाँ पर b होगा, अगर आप कंपेयर करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये जो b है इसी का स्क्वायर करेंगे प्लस और इसी का स्क्वायर करेंगे माइनस. अब आगे व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडेंटिटी कौन सी? a मीन्स x, b क्या है इसमें? 11 by 6 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज 11 by 6 का होल स्क्वायर? 121 by 36 प्लस 10 by 3 equal to 0. Okay, अब shift these terms to other side. So x plus 11 by 6
whole square 121 by 36 minus 10 by 3. So again we have to solve it further. So LCM of 36 and 3 is 36. So what we get? It is 121 minus 3 into 12 is 36. So 12 times are 120. So क्या आ गया हमारे पास? This one. अब बेटा देखिए हमें क्या बोला गया था कि फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट. तो अभी एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन दिस स्टेप. बिकॉज अगर यहां पर हमारा आता है 0 तो मीन्स तब भी रूट्स होंगे. अगर यहां पर नेगेटिव आता है तो रूट्स नहीं होंगे. क्यों? बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. फिलहाल तो ये पॉजिटिव आया है. So therefore roots exist. So therefore real roots exist. अब फाइंड कर लीजिए. शिफ्ट स्क्वायर टू दैट साइड 11 by 6 is equal to plus minus 1 by 36. So whenever we shift square to other side it will become plus minus because the square of plus and the square of minus remain same. Like माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 4 एंड प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है वो भी 4 ही होता है. तो वी हैव टू राइट प्लस माइनस हियर. अब these when you shift it to other side become minus plus minus 1 upon 6. LCM is 6 minus 11 plus minus 1. तो what are the roots now? एक आ जाएगा minus 11 plus 1 by 6 minus 11 minus 1 by 6. What is this? This is minus 10 by 6, which is minus 5 by 3, and minus 12 by 6 is minus 2. So therefore, roots are minus 5 by 3 and minus 2. Understand? So how to do this now? Coefficient of x raised to dividing both sides by 2. Dividing both sides by 2. So what do you have? X square plus 3 whole upon 2 is equal to 0.2. So what do you have? X square minus 7 by 2x plus 3 by 2 equal to 0. So this is the first step now. The second step is we have to make it whole square. But अब ये whole square, since we have minus over here, so this must be the identity of a minus b whole square. So x square minus 2 into x. अब क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. So what we write? We multiply the denominator by 2 now. Plus 3 by 2 equals to 0. Understand? So students, x square minus 2 into x into क्या आ गया 7 by 4. I told you whatever number over here we have to add and subtract the square of this number. So याद रखना हम इसको क्यों ऐड करते हैं और subtract करते हैं so that we will get the identity. अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? Using identity a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. So what you have? We have x minus 7 by 4 का square because b is 7 by 4 minus 7 square is 49, 4 square is 16 plus 3 by 2 equal to 0. Now shift these terms to other side. X minus 7 by 4 whole square equals to 49 by 16 minus 3 by 2. So LCM is 16. What do we have? 2 8 is 24
means 25 by 16. So students, as I told you, the square of a number is always positive or it may be zero. अब ये positive आया है, it means real roots exist. So therefore, real roots exist. So what to do now? Now we have to find the roots. Shift the square to other side. What do we get? Plus 1 is square root of 25 by 16. So in this way, x is equal to 7 by 4. What is the square root of 25? It is 5. 16 का 4. So beta, your answer are 7 by 4 plus 5 by 4 and 7 by 4 minus 5 by 4. So when you take the LCM of it, so what do you get? 7 plus 4 is 12. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 by 4 which is 3 and 2 by 4 which is 1 by 2. So therefore roots are 3 and 1 by 2. Okay. Okay, the next part. Questions appears to be same, but you must be little careful about the roots, whether the roots exist or not. So first step is dividing both sides by 2. So we do it straight away. 2x square plus x 4 by 2 equals to 0 by 2. So it is x square plus x by 2. 4 by 2 कितना होता है? 2 होता है. So this is the first step now. अब to make it whole square, what do we do? Let x is a. This is a. A square plus 2 into a into b. I told you b क्या होगा? जो भी यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x होगा, यहाँ पर क्या 1 by 2 है ना, उसको डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या आ जाएगा ये 1 by 2 into 2. ये स्टेप का ध्यान रखना है आपने. सो अब क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 by 4. सो यहाँ पर b इज 1 by 4. तो क्या करते हैं हम इसको, इसी का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1 by स्क्वायर का इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? द फर्स्ट आइडेंटिटी यूजिंग, बेटा you have to write the identity also. Which one? That is a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b का whole square. Okay, so करिए इसको चेंज. क्या आएगा ये? Here a is what? x. तो x आ गया प्लस 2 into a into b. b क्या है? 1 by 4. तो प्लस 1 by 4 whole square. ठीक है. देन माइनस व्हाट इज 1 by 4 का स्क्वायर? इट इज 1 by 16. व्हाट इज दिस? 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यू हैव टू शिफ्ट दिस टर्म टू अदर साइड. सो व्हाट यू गेट? x प्लस 1 by 4 whole square. And now what this minus 1 by 16 when you shift it to other side, it will become plus 1 by 16 minus 2. So what we have? LCM is 16. 1 minus 16 2 is 32. Now students, look at here. What we have? X plus 4 whole square equals to minus 31 by 16. अब what I told you, you have to find the roots if they exist. तो बेटा हमें पता है किसी का भी स्क्वायर जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव. अब क्योंकि ये हमारा 0 आ गया, 0 से छोटा है, सो सिंस minus 13 by 16 is less than 0, so therefore no real roots exist.
Understand, students? Okay, now question number 4th. 4x square plus 4 root 3x plus 3. Now here we have root, but don't worry, whether we have root or whatever may be the value over here, you have to follow the same method. So first step क्या होगा? Dividing both sides by 4, because the coefficient of x square is 4. So x square plus 4 root 3x plus 3 divided by 4 is equal to 0 by 4. This means a 4x square by 4x square is x square. 4 by 4 is root 3 plus 3 by 4 is equal to 0 by 4. Now, अब if you look at here, just ध्यान देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? Coefficient of x is root 3. So, to make it whole square, a square plus 2 into a into b. What I told you कि अपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 तो है ही, ऑब्वियस सी बात है. So, what we write? We write 2 in the denominator. अब plus 3 by 4 is equal to 0. Okay? So, अब how to make it a whole square? So it is what? X square plus 2 into x into what I told you कि हमें कोफिशिएंट जो भी यहाँ पर आएगा नंबर उसी के स्क्वायर को ऐड करना है और सेम से हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट यू हैव? रूट 3 by 2 प्लस रूट 3 by 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 by 2 स्क्वायर प्लस 3 by 4 इक्वल्स टू 0. अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी होगी? We know that since it is plus over here, so using identity, which one? That is a square plus 2ab plus b square equals to a plus b का whole square. तो मतलब this is identity of a plus b whole square. तो what is a? A is x. What is b? B is root 3 by 2. So plus root 3 by 2 square. Okay now. So यहाँ तो हो गया. अब minus. What is root 3 by 2? Root 3 square is 3. 2 square is 4. Plus 3 by 4 equal to 0. अब बच्चों there is no need to shift it to other side because both can be cancel out. तो मतलब हमारा क्या आ गया? The value of this here comes to be 0. And I told you, अब बताओ रूट्स होंगे? Yes होंगे. I told you यहाँ पर या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो रूट्स होंगे, रियल रूट्स. ओके, सो देयरफॉर रियल रूट्स exist. So what to do? Shift square to the other side. So what you have? X plus root 3 by 2. Square क्या बन जाएगा? Plus minus root 0. And you know root 0 is 0 ही होता है. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी x की? Minus root 3 by 2 plus minus 0. So we have two roots. What are those? One is minus root 3 by 2 plus 0 and minus root 3 by 2 minus 0. And students एक चीज का ध्यान रखना, whenever you have 0 over here, तो रूट्स हमारे क्या आएंगे? आंसर्स सेम ही आएंगे. So what are the answers that we have? We have two roots, that is minus root 3 by 2 and minus root 3 by 2. Okay, so therefore these are the real roots. Okay students, now the next part is root 2x square minus 3x minus 2 root 2. Students, आपने रूट्स को देखकर घबराना नहीं है. You have to follow the same method. First step क्या होगा? Dividing both sides by
what? We have to divide both sides by root 2. So root 2x square minus 3x minus 2 root 2 upon root 2 equals to 0. So when you divide it, what you get? You will get x square. यहाँ क्या आएगा? माइनस 3 बाय रूट 2x माइनस 2 रूट 2 बाय रूट 2. ओके, सो यहाँ पर रूट 2 एंड रूट 2 दे आर कैंसल आउट. सो अब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. नो, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू होल स्क्वायर. तो क्या आएगा? माइनस 2 इंटू ए इज व्हाट? एक्स. बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है. क्या आएगा? 3 बाय रूट 2. ओके, अब जब हमने इसको चेंज करना, मैंने क्या बोला था आपको? हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम इस 2 से 2 को काट दें तो सेम वैल्यू हो जाएगी. तो ये हमारा एक स्टेप है, इसको फॉलो करना है आपने कि जो भी यहाँ कोएफिशिएंट होगा उसके डिनोमिनेटर को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना. सो अब व्हाट इज द value that we have to add or subtract? That is the square of this number. So x square minus 2 into x into 3 by 2 root 2 plus 3 by 2 root 2 square minus 3 by 2 root 2 square minus 2 equals to 0. So what we have now, similarly unity कौन सी आएगी? a minus 3 by 2 root 2 का होल स्क्वायर. वाई? बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दिस आ गया, प्लस बी स्क्वायर. अब आगे देखिए, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 2 स्क्वायर 2 होता है, तो आ गया 4 2 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो द नेक्स्ट क्या आएगा? x माइनस 3 बाय 2 रूट 2 होल स्क्वायर. शिफ्ट टू दैट साइड, minus 9 by 8 plus 2. So we have to solve it further. X minus 3 by 2 root 2 whole square. LCM is what? LCM is 8. So 8 to the 16. So what we have? 9 plus 16. Okay students. And यहाँ क्या आएगा? X minus 3 by 2 root 2, shift square to other side, क्या बन जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट? 9 प्लस 16 क्या होता है? 25 by 8. ओके, सो you have to simplify it. प्लस 3 by 2 root 2 प्लस माइनस रूट 25 क्या होता है? दैट इज 5 एंड रूट 8. नो बेटा, रूट 8 is not a perfect square. So उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? रूट 8 can be written as root of 2 into 2 into 2. So when we take 2 common, you will again get 2 root 2. देखो समझ आ रहा है आपको? देखो हम रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2. Can we? So if you make a pair of it, so you can take one pair outside the root, you will get 1. Okay बच्चों? So in this way you will have root 8 is equal to 2 root 2. Okay, now अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज द एलसीएम? 2 root 2. So 3 plus minus 5. So therefore the two roots are 3 plus 5 by 2 root 2 and 3 minus 5 by 2 root 2, 8 by 2 root 2 and minus 2 by 2 root 2. So you can cancel out. So क्या आएगा? 4 by root 2. तो यहाँ क्या आएगा? minus 1 by root 2. So therefore these are the real roots. Understand students? Are the real roots. Okay? 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0. Dividing both sides by 4. So when you divide both sides by 4,
what we get? We get x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0, dividing both sides by 4. Okay, but if you want, you can skip this step also. You can directly divide. So what we have? X square plus bx minus a square minus b square by 4 equal to 0. So change it to whole squares. कैसे? This is x a square plus 2 into a into b. यहाँ पर b तो b ही है. So what we do? We have to divide this by 2. मतलब हमको डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. Minus same a square minus b square by 4 equals to 0. So therefore what we have now? अब बेटा, as I told you, we have to add the square of b by 2 and subtract the square of this on this side of it. So what you have? 2 into x into b by 2 plus b by 2 square minus b by 2 square minus of a square minus b square by 4 equal to 0. This remains same. इनमें there is no change. So अब ये क्या बन गया? a plus b whole square minus what is this? This is when you shift this to this side, ये क्या बन जाएगा? b by 2 square minus become plus a square minus b square by 4. Open the bracket. This will become b square by 4. You can write this right as a square by 4 minus b square by 4. Because when you split these terms, this 4 is divided by both a square by 4 and b square by 4. Now look at this. These terms can be cancelled out. So what you have? So we have x plus b by 2 whole square is equal to a square by 4. Okay. Now up this term is also positive. So therefore real roots exist. So since a square by 4 is positive, or you can say it is greater than 0. It is greater than 0 because all the positive terms are greater than 0. So therefore roots exist. तो रूट्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर को वहां शिफ्ट करो, क्या बनेगा? प्लस माइनस a square by 4. So what you have? Minus b by 2 plus minus. अब इसका क्या आएगा? When you solve this, root of a square क्या होता है? a. Root of 4 क्या होता है? 2. तो my dear students, दो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? माइनस b by 2 plus a by 2 and minus b by 2 minus a by 2. So therefore real roots are, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो माइनस बी प्लस ए बाई 2 एंड माइनस बी माइनस ए बाई 2. ओके स्टूडेंट्स.